So now we solve one numerical example based on a algebraic method. So what is the problem? Problem is for the game with following payoff. ये payoff given है, इससे आपको क्या find करना है? Optimum strategy and value of the game. So first of all, we check that we able to find out the solution of this game with the help of a max mini max principle or not. तो मिनी मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट रो का मिनिमा क्या है आपका? फर्स्ट रो का मिनिमा है 1, सेकेंड रो का मिनिमा है 3. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ मिनी मैक्स? मैक्स मिनी, मैक्स मिन, मैक्स मिन इक्वल 3. And the maximum of a first column be the 5 and second column be the 4. So what is the value of a minimum of minimax? Minimax equal what? Minimax equal 4. This means max min does not equal to minimax. Minimax. इसका मतलब ये हुआ कि we unable to find out the solution with the help of a max mini minimax principle. And second conclusion is what? This one is a two-person zero sum game without saddle point. अगर minimax max mini के equal हो जाता तो हम लोग कहते हैं this one is a two-person zero sum game with saddle point, but max mini does not equal to minimax. Meaning of this one is a two-person zero sum game without saddle point. If without saddle point, then we apply the algebraic method. So here we assume that what? Let SE with the optimal strategy for the player A, SA A1, A2 with probability P1, P2 with the optimal strategy for player A. यहाँ पे पहले सबसे पहले पे ऑफ मैट्रिक्स को क्या लिख लेंगे? Let SA be the optimum strategy, optimum strategy for player A such that P1 plus P2 equal what? P1 plus P2 equal 1 and SB equal B1, B2 with probability Q1 and Q2 be the optimal strategy, optimal strategy for player B such that Q1 plus Q2 equal 1 if this one is a payoff matrix. If A के लिए payoff matrix क्या हो गई आपकी? A के लिए payoff matrix A1, A2 and B1, V2. Here we write what? Here B1, V2, 5, 1, 3, 4. तो इसे आप पहले भी लिख सकते थे कि ए अगर आपकी ए की टू स्ट्रेटजीज हैं जिसे आपने डिवाइड किया है, फर्स्ट स्ट्रेटजी विद A1, सेकेंड स्ट्रेटजी विद A2. बी के लिए आपके पास दो स्ट्रेटजीज हैं B1 एंड B2 और उनका पे ऑफ मैट्रिक्स है आपका 5, 1, 3, 4. Now what is the values of a P1 and P2, Q1 and Q2? So as we know that अभी जैसा हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था कि जो है A1, A2 और P1, P2 और Q1, Q2 की वैल्यू क्या होती है, तो जैसा अलजेब्राइक मेथड में अभी हम लोगों ने डेराइव भी किया था कि इफ ये आपकी पे ऑफ मैट्रिक्स है A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. This one is a payoff matrix
payoff matrix for the player A and player B. Player A के लिए means this one is A1, A2 and B1, V2. Then what is the value of? Then P1 equal what? P1 equal A22 minus A21 upon A11 plus A22 minus A12 प्लस A21। तो इसे याद रखने के लिए ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट माइनस दिस वन एंड sum of a diagonal element, principal diagonal elements minus second diagonal elements. So this one is a way how we remember the formula. Now, and what is the value of a P2? P2 equal what? P2 equal हो जाएगा आपका P2 equal 1 minus P1. So if we compare with this problem, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है आपकी? I think 5 1 3 4 5 1 3 4 दिस वन इज 5 1 3 4। अगर इससे हम कंपेयर कर लें और इसे A1 लिखते हैं, इसे A2 एंड दिस वन इज B1 B2। So what is the value of a P1? Then this implies that what is the value of a P1? P1 equal 4 minus 3 divided by 5 plus 4 minus 3 plus 1 means a 4, 3 plus 1. So this become what? 1 by 9 minus 4, 9 minus 4. This become what? This become 1 by 5 and 1 by 5. So what is the value of a P2? P2 become 1 minus 1 by 5. So this become 4 by 5. So this one is the value of a P2. In a similar manner, similarly, if we talk about the Q1, what is the formula for the Q1? जो अभी हम लोगों ने derive किया था, Q1 equal A22 minus A12 divided by denominator same होता है आपका A11 plus A22 minus A12 plus A21. So what is the value of a Q1? So and Q2 equal what? Q2 equal 1 minus Q1. तो यहाँ पर A11, A12, A21, A22 की वैल्यू पुट कर दें according to this question, then Q1 become what? 4 minus 1 divided by 5 plus 4 means 9 minus 4 because denominator सभी में same है, so this one become what? 3 by 5 and what is the value of a Q2? Q2 become what? 1 minus 3 by 5 and this become 2 by 5. So this one is a value of a Q2. Similarly, what is the value of a game? If we talk about the value of a game be the A11, A22 minus A12 into A21 divided by A11 plus A22 minus A12 प्लस A21। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीपल का डिफरेंस न्यूमरेटर में होगा और सम का डिफरेंस डिनोमिनेटर में होगा। दिस वन इज हाउ वी रिमेंबर द फार्मूला। सो अब b की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? 20 माइनस 3 5 इंटू 4 minus 2 into 2 into what? 3 into 1. 3 into 1. 3 into 1 divided by 9 minus 4. So this become what? 20 minus 3 divided by
5. This one equals 17 by 5. So this one is a value of a game. So how we write the answer? Because here कैसे हम लोग आंसर लिखते हैं एग्जाम में? ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर द प्लेयर ए, एस ए इक्वल A1 A2 with probability P1 and P2. What is the value of P1 and P2? 1 by 5 and 4 by 5. 1 by 5 and 4 by 5. And what is the value of optimal strategy for the player B? Here we write a B1 and B2. And what is the value of a Q1 and Q2? Q1 and Q2 become 3 by 5. 3 by 5 and 2 by 5. And what is the value of a game? Value of a game become what? Value of a game becomes 17 by 5. So this one is a way how we write a answer. Optimal strategy for player A is this one, जो हम लोग यहाँ पे highlight कर रहे हैं. Optimal strategy for the player B is this one, B1, B2 with probability Q1 and Q2, and value of the game is the 17 by 5. 17 by 5. Now we solve another example, means solve the following game and determine the value of the game. सेम है, केवल पे ऑफ मैट्रिक्स आपकी डिफरेंट हो गई. तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मिनी मैक्स मैक्स मिनी प्रिंसिपल से चेक कर लेंगे. तो रो मिनिमा लिख लेते हैं यहाँ पे. रो मिनिमा आपका है, रो मिनिमा इक्वल फर्स्ट रो का मिनिमा -3, सेकेंड रो का मिनिमा -3. So what is the maxima? Maximin become -3, and column maxima become what? First column का maxima आपका 6 and second column का maxima 0, and mini max become what? Mini max become 0. What is the indication of this one? This means mini max does not equal maximin. This means we are unable to find out a solution with the help of a mini max mini principle. So इसका मतलब ये अदर वर्ड्स में ये कहें कि विद द हेल्प ऑफ अ प्योर स्ट्रेटजी की हेल्प से हम लोग एक ऐसी वैल्यू अनएबल टू फाइंड आउट द सच वैल्यू, जिससे कि ये हम ये कह सकें कि दिस वन इज अ प्रॉफिट फॉर द प्लेयर ए एंड दिस वन इज अ लॉस फॉर द प्लेयर बी. प्योर स्ट्रेटजी की हेल्प से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं. This one is the meaning of a mini max mini principle. It be unable to apply the mini max mini principle. So हम क्या करेंगे? Mixed strategy use करेंगे. Combination of a A1 and A2, combination of a B1 and B2, and trying to find out a value which is a expected gain for the player A if A start the game, and expected loss for the player B. So here let SA be the optimal strategy A1, A2 with probability P1, P2, and SB be the optimal strategy for the player B with probability Q1 and Q2 for what? For A1, A2, here 6 -3 0 B1 B2. इस पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए ये हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये क्या है आपका, these are the optimal strategy. So by the algebraic method we know that what is the
value of a game. So here value of a game and what is the values of a P1 and P2. तो यहाँ पे फिर से पे ऑफ मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम लोग, जिससे कि पीछे बार बार आपको ना देखना पड़े. 6 minus 3, 6 minus 3 minus 3 minus 3, 0. This one is for player A, A1 and A2, and this one is for player B, B1 and B2. So here we assume that for the standard, this one is equivalent to what? A11, A12, A21, A22. So by the formula of a P1, P2, Q1, Q2 by algebraic method. Now by algebraic method, what is the value of a P1? P1 equal, जैसा मैंने आपसे कहा, 0 और वही फार्मूला आप फिर से लिख देंगे, A22 minus A21 divided by difference of a sum of a diagonal element. So A11 plus A22 minus A12 plus A21. And what is the meaning of this one? Meaning of this one is a 0 minus minus 3 divided by A11 plus A22. This means 6 plus 0, 6 plus 0 minus minus 3, and this become what? 3 by what? 6 plus 6, this means 12. 3 by 12. If we simplify this one, this become 1 by 4. So what is the value of a P2? P2 become what? P2 equal 1 minus P1. P1, this become 1 minus 1 by 4. This become 3 by 4. So this one is a value of a P1 and P2. Similarly, what is the value of a Q1? Q1 equal A22 minus A12, और डिनोमिनेटर में सेम डिफरेंस ऑफ अ डायगोनल एलिमेंट्स. A11 plus A22 minus A12 plus A21, A21, और यहाँ पे वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो 0 minus 3, अगेन सेम वैल्यूज हैं आपकी, minus 3, and in the denominator this one is a 6 plus 0 and minus 3 minus 3. So this become what? 3 by 12, and this become 1 by 4. And we try to find out the value of a Q2. Q2 equal 1 minus Q1. Q1, so Q2 become here 1 minus 1 by 4. So what is the value for this one? 3 by 4. So Q2 become 3 by 4. और यहीं पर अगर हम लोग वैल्यू ऑफ द गेम भी फाइंड करें, वैल्यू ऑफ द गेम इज व्हाट? न्यूमरेटर इज अ difference of a multiple of a diagonal elements, means A11, A22 minus A12, A21 divided by difference of a diagonal element, A11 plus A22 minus A12 plus A21. तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो 0 into 6, 0 into 6 minus A12 into A21, this become minus 3 into minus 3, this become 9, divided by what? Divided by 6 plus 6. So this become minus 9 by 12, or this one equal minus 3 by 4. So this one is a value of a gain. So how we write the answer? Answer कैसे हम लोग लिखते हैं? ऑप्टिमल स्ट्रेटजी जैसे SA क्या हो गया? So here we write answer. Optimal strategy for A.
optimal strategy for player A such that SA equal combination of A1 and A2 with probability what? With probability 1 by 4 and 3 by 4. With probability 1 by 4 and 3 by 4, and optimal strategy for player B is what? SB equal B1 B2 with probability Q1 Q2 and value of the game with a -3 by 4. से highlight कर दें हम लोग. This one is a what? This one is a mixed strategy for the player A, and this one is a mixed strategy for the player B, and this one is a mixed strategy for the player, sorry, this one is a value of the game -3 by 4. तो आप ये कह सकते हैं कि with the combination of a A1 A2 and this combination of a B1 B2, प्लेयर A के लिए 3/4 का लॉस है एंड प्लेयर B के लिए 3/4 का प्रॉफिट है. Because here we assume that the given payoff matrix is a payoff matrix for the player A. So this one is a way how we find the solution of a two-person zero-sum game without saddle point. Saddle point नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि प्योर स्ट्रेटजी की हेल्प से हम वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड नहीं कर पाएंगे. मीन्स एक ऐसी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे जो कि ए के लिए प्रॉफिट हो, बी के लिए लॉस हो, वाइस वर्सा. मीन्स ए के लिए लॉस हो, बी के लिए प्रॉफिट हो. लेकिन 2% जीरो सम गेम विदाउट सैडल पॉइंट में तब हम क्या करेंगे? स्ट्रेटजीज को मिक्स करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज फाइंड करेंगे विथ प्रोबेबिलिटी P1 एंड P2, Q1 एंड Q2, जिससे एक ऐसी वैल्यू हम फाइंड कर पाए दैट वैल्यू इज नोन एज अ वैल्यू ऑफ द गेम, जो कि फर्स्ट के लिए प्रॉफिट हो, सेकंड के लिए लॉस हो, और फर्स्ट के लिए लॉस हो, सेकंड के लिए प्रॉफिट हो. थैंक यू ज्वाइनिंग माय लेक्चर्स.